As we know, the role of media is to inform, educate, and entertain. But is the media, especially in the context of journalism, effectively doing its job, or is it getting muzzled? The decline in India's rank in the World Press Freedom Index is certainly a matter of grave concern, which is why we've decided to discuss this topic. Is media truly playing its role as the fourth pillar in our democracy? And there's no better person to discuss about it than Mr. Karthikeya Sharma, who, as you all know, is a political leader and a media owner. So welcome, Mr. Sharma. Thank you. Thank you. I would start with the obvious question. As a politician and a media owner, how do you strike a balance between both? So before I answer that, I'll start off by telling you a famous quote by Claren Atkins, which says that media is an entertainment industry with objectivity. That is what media is. To put it in context to what you were saying earlier. To answer your question, I'll speak in Hindi and English because a lot of you viewers are also... Yeah, it can be bilingual. तो ये इस तरीके से आपको देखना चाहिए कि हम मीडिया का काम भी करते हैं, लोगों तक उनकी बात पहुंचाते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, और वही काम है जो सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक माध्यमों से आप समाज सेवा में और राजनीति में भी करते हैं. तो मूलभूत दोनों विषयों में कोई फर्क नहीं है. दोनों एक ही दृष्टिकोण से निकलते हैं, एक ही सोच से निकलते हैं, और दोनों का औचित्य भी एक है, रास्ते अलग अलग हैं. पहले मैं एक अलग व्यवसाय चलाता था, उस व्यवसाय के अंदर मुझे जो काम मिलता था एक मीडिया संस्थापक के तौर पर, संचालक के तौर पर, मैं वो करता था. और अब जो मुझे लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्ति का एक रोल होता है, उनकी बात उठाना संसद के अंदर या किसी भी पटल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तब मैं वो काम करता हूँ. तो जो कॉन्फ्लिक्ट की बात आप कर रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब आप एक ही पद पर, दोनों पद पर रहते हुए एक ही काम करते हैं. जब आप दोनों पद पे अलग अलग रहते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है. सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज एंड हाउ यू वांट टू, हाउ सीरियस आर यू अबाउट इट. I am a person who likes to do things very seriously, whether it's my media business or my political career. Both are extremely important. नहीं, कहीं ना कहीं मीडिया का जो क्रेडिबिलिटी का बात आता है, कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है बिकॉज ऑफ आपका पॉलिटिकल कैरियर है, कहीं ना कहीं कन्वर्जन होता है, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट एंड कोलिजन भी होता है. सो दिस इज नॉट ओनली आपके ऊपर के बात नहीं है, जनरल ट्रेंड जो देख रहे हैं. I agree. See, we are all social animals. We are not living in an island. हम अकेले नहीं रहते, हम सोसाइटी का पार्ट है. चाहे जर्नलिस्ट की बात करूं, चाहे मैं किसी लॉयर या जज की बात करूं. मैं दो उदाहरण आपको मीडिया फ्रेटर्निटी के मतलब इस पोजीशन के अतिरिक्त देता हूं. एक उदाहरण है, एज अ जर्नलिस्ट यू आर अ सीनियर एडिटर, यू हैव योर ओपिनियंस, यू हैव योर व्यूज़, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी सोच है. पर क्या आपकी आइडियोलॉजी और आपकी सोच ही आपका कंटेंट बनती है? That is where objectivity का बात आता है. Exactly my point. So when objectivity is there, it doesn't matter whether you are in a position where you are making policy as well as running a media entity. Although in my case, I am not actively running the media entity anymore. I am almost like a person who's the founder who started, but not running it hands-on anymore. My wife runs the media entity. But for someone who's been associated with the industry for so long, absolutely. My first love in that sense and my first calling will always remain media, because when I came back to India, that is what I started doing. मैंने अपनी शुरुआत वापस आकर फैमिली बिजनेस नहीं ज्वाइन करके स्क्रैच से ये मीडिया कंपनी का शुरुआत. आप ये एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं मीडिया का क्रेडिबिलिटी सफ़र हो रहा है? देखिए, मीडिया का क्रेडिबिलिटी सफ़र हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं. देयर आर नंबर ऑफ रीजंस एंड अंडरलाइंग रीजंस फॉर इट. टुडे you have to not see it in a very simple context. You have to understand the complexity of the issue.
ये विचित्र तरीके की प्रॉब्लम है। आपके पास सिर्फ एक माध्यम था आज से 400 साल पहले जो अखबार था, जब मीडिया शुरू हुआ, फिर आपका रेडियो आया, फिर आपका टेलीविज़न आया, फिर आपका डिजिटल मीडिया आया, फिर आपका सोशल मीडिया आया। इस 400 साल की जर्नी के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से माध्यम बदलते रहे हैं और उन माध्यमों से किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए उनका कैसे अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हम अखबार पढ़ते हैं, वी रीड लेफ्ट टू राइट, वी डोंट रीड राइट टू लेफ्ट। द ह्यूमन ब्रेन इज कन्फिगर्ड टू रीड लेफ्ट टू राइट, एंड यू फर्स्ट रीड द हेडलाइन, देन you read the byline, and then you decide whether you want to read the whole article or not. Once you've read the article, then you make up your mind कि you agree with the article or not. Now, in the era of AI, artificial intelligence के अंदर, there is only content which is being thrown at you, which the AI algorithm thinks that you want to watch or read. It is robbing you of that opportunity to be able to have a difference of opinion or have an alternative opinion. Now, that is a very big shift when you understand from the old media, which almost forced you to read an alternative viewpoint, to this media, which is forcing you to read only your viewpoint. It's a very big shift from that. Now, who's doing it? What is the reason for it? It's technology. No one's responsible for it. But these are impacts and effects of technology that is changing how we consume content, how content impacts us, and the whole question of objectivity goes out of the window then. Because who's to decide whether that content is objective or not? That is what AI is doing, that is what machine learning is doing for you. So you have to understand that it's not as simple. Are we objective? Let me give you another example. Let's take the example of a lawyer in a judiciary. Very often people say that judges administer justice as per what the law says. And they are not affected by society, people, public, nothing. Public opinion doesn't matter to them. But that is not reality. It matters. What happens to the society and what society thinks, what their impression is, has a definitive impact on the judge while he's delivering justice. So when we say we have to be unbiased, when we say we are not affected by what is happening out there, it is absolutely incorrect. We are absolutely affected. What we must as journalists do is to ensure that our body of work is not reflective of that, as much as possible. Getting affected and going for some kind of a patronage. If you see the trend in the media in India, we see that all media houses, most of the media houses at least, they are having some kind of political patronage. ये जो political intolerance, political interference ये जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये news media को तो बहुत affect कर रहा है. You also run a business, you certainly have experienced it. I have not experienced any political interference. I come from the state of Haryana. My channel in Haryana has about 78% market share. And my father has been in politics. My father-in-law is the former speaker. His father is a 4-time MP from Karnal. My entire family is into politics from different political parties. And yet, I have 78%. Let me complete. Yet I have 78% market share is because what the content we are showing, people want to watch and they want to hear. Today, we are sitting on this platform, which is owned by my senior colleague, and you are asking me this question stands testament of the fact that there is freedom of expression and democracy in media. Now, whether that freedom of expression and democracy exists in mainstream media only, or is it also, you will subject social media, influencer media and independent media to it also. I don't see anyone asking them those questions. What is this concept of independent media? Because you decide that you are individually going to make content, you become independent media. Who has given you that title? Or who has given you the sanctity that you are the real form of media? Or the other media, mainstream media, is to be questioned? Can the bona fide of so-called independent media not be questioned? Mainstream media, where is the money coming from? Who is funding those? That is the question I'm also asking. See,
the point is, people decide. You and I will not sit in judgment of products. People of this country, the viewers, they decide who to watch, who not to watch. क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका फैसला नहीं करेंगे. और ये आज की एडिटर्स, संपादकों की एक बहुत बड़ी कमी है. सॉरी टू बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, बिकॉज आज क्या हुआ है कि पहले संपादक और एडिटर्स डिसाइड करते थे कि आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या देखेंगे. वो आपका फैसला आपके लिए करते थे, क्योंकि उनको सब कुछ पता है, संपादक को सब कुछ पता है. अब समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई है. अब लोग खुद फैसला करते हैं कि उनको क्या देखना है, तो आप क्या पढ़ना है. आप क्या सोचते हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया है, स्पेशली सोशल मीडिया, डेमोक्रेटाइजेशन, इज इट अ बून और अ बेन? इट इज हाउ यू सी इट, लुक एट इट. Who are we to stand in judgment of saying that it is a boon? आपको क्या लगता है? I think everything that is evolutionary is a boon. Like the human race. We all evolve. So is the medium that is evolving. तो जब मीडियम इवॉल्व होएगा तो उसकी त्रुटियां भी निकलेंगी, कमियां भी निकलेंगी, अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी भी होंगी. It depends on us what we want to take forward and what do we want to leave behind. Because you've been also handling the business side of media, so अब ये भी एक डिस्कशन पे आता है कि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ज़्यादा आ रहा है, वेयर जर्नलिज्म पॉसिबली ऑल्सो सफर्स बिकॉज जो कॉर्पोरेट स्कैम्स होता है, जो सोशल इल्स होता है, कहीं ना कहीं मे बी मीडिया ऑल्सो रिफ्रेन्स फ्रॉम रिपोर्टिंग दोज. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि India, Bharat is not any different from any other country in the world. Let's take the most developed country in the world in that sense, and which is the epitome of democracy, America. Do you know how many companies fundamentally own media in the United States? Maybe 3 or 4. Now you can call it cronyism, you can call it a monopolistic practice over there, you can call it whatever you may. But does that make it right or wrong? Or let's say that the state in the United Kingdom owns and runs the BBC, which is the national broadcaster, which is in many ways run by the Home Office and the Foreign Office. Is that right or wrong? Who are you and me to decide that what is right? People will decide that. Viewers will decide that. Readers will decide that. And a lot of people are not realizing that this is the true democratization of the media as an entity. चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया के माध्यम से हो, अल्टीमेटली ये फैसला लोगों का है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, और वो फैसले की ताकत भी अब उनके हाथ में आ गई. हम जो बिजनेस के साइड डिस्कस कर रहे हैं तो लोगों को चॉइस बहुत ज़्यादा है, वो सही है, लेकिन जब सब्सक्रिप्शन मॉडल का आता है, आप न्यूज़पेपर भी चलाते हो, आप सैटेलाइट चैनल भी चलाते हो, सब्सक्रिप्शन में समवेयर इट डजंट वर्क आउट, द रेवेन्यू डजंट वर्क आउट. इसीलिए लेट मी कंप्लीट द क्वेश्चन दैट दिस द कंपटीशन फॉर एडवर्टाइजमेंट, द कंपटीशन फॉर पैट्रोनेज, द कंपटीशन फॉर टीआरपी, ये इतना ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं डोंट यू थिंक द मीडिया इटसेल्फ इज मीडियाज वर्स्ट एनिमी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं भारत की बात करता हूँ. अगर आप न्यूज़ प्रिंट, आप खुद पेपर जर्नलिस्ट भी रहे हैं, आपने सारे माध्यम देखे, टेलीविज़न भी देखे हैं, आप एक त्रुटि समझिए. जब न्यूज़पेपर भारत में आया और उसके बाद जब टेलीविज़न आया, तो न्यूज़ कंटेंट कभी भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड बहुत बड़ा नहीं था. अगर अखबार आपकी कॉस्ट 15 रुपये थी तो आप सिर्फ 3 रुपये या 2 रुपये लेते हैं अखबार का, वो सब्सिडाइज प्रोडक्ट है. कभी भी आपने सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं कमाया उसके अंदर. मेरा वही क्वेश्चन है, जब सब्सक्रिप्शन से पैसा नहीं आता है. मैं आपको भी उसी का जवाब दे रहा हूँ. और यही प्रॉब्लम रही न्यूज़ टेलीविज़न के अंदर भी. हालांकि कुछ चैनल सब पेड हैं, पर बहुत ही कम, और कुछ उनको रेवेन्यू नहीं आता है. तो चाहे अखबार हो चाहे टेलीविज़न हो, कभी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू न्यूज़ में आया ही नहीं है. पहली बात तो ये गलत फहमी है जो करेक्ट होनी चाहिए. दूसरी बात, दुनिया में सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू अभी किसी के पास भी नहीं आ रहा है, साइजेबल रेवेन्यू. चाहे आप इकोनॉमिस्ट की बात कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर लें, जो सबसे इवॉल्व मीडिया नेटवर्क्स हैं वर्ल्ड के, उनके पास भी नहीं आ रहा है. उसका कारण है कि जो चीज़ लोगों को फ्री में मिलती है उसके लिए लोग पैसा देना पसंद नहीं करते. और जब तक आप उनको ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो उनके काम आने वाली चीज़ है, उनकी यूजेबल है, जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको काम आएगी, वो उसके लिए पैसा नहीं देंगे. और हम तो वैसे भी वैल्यू बेस्ड सोसाइटी हैं. हमें तो अगर जब तक अच्छी डील नहीं मिलेगी
हम तो पैसा बिल्कुल ही नहीं देंगे। So, which is why अब ये न्यूज़ को जो कमोडिफिकेशन हो रहा है, न्यूज़ का पैकेजिंग, न्यूज़ एज ए प्रोडक्ट, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि न्यूज़ की कमोडिफिकेशन एक टर्मिनोलॉजी है, पर उसके साथ साथ एवोल्यूशन भी हो रहा है। यानी कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा है? अब जैसे कम्युनिटीज़ बन रही हैं, प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। पहले न्यूज़ आती थी लीनियर फॉर्मेट में और आप डिसाइड करते थे किसको क्या देखना है। अब आती है जब मुझे देखना है एज अ प्रोएक्टिव थिंग, when which I am a seeker, I seek what I want, whether it is an article or video। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है और उसकी वजह से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि न्यूज़ इज़ नॉट ओनली पॉलिटिकल न्यूज़, न्यूज़ इज़ नॉट ओनली एंटरटेनमेंट न्यूज़। There is a lot of news which people want to know out there, but because we never knew that people want to consume that content, because some editor was sitting in a room deciding what people will watch, वो फैसला वो करता था, इसलिए पता ही नहीं था। अब पता लग रहा है कि हेल्थ के भी आपको ट्रैक्शन मिल रही है, अब आपको पता लग रहा है कि टेक की भी मिल रही है, अब आपको पता लग रहा है बैंकिंग, पर्सनल फाइनेंस की भी ट्रैक्शन मिल रही है। ऐसे ऐसे एरियाज का पता लग रहा है जिन पे आपका बहुत ध्यान जाता ही नहीं था। न्यूज़ की डेफिनेशन और परिभाषा भी बदल रही है। नहीं, ये जो पैकेजिंग हो रहा है कहीं ना कहीं द स्कोप टू मैनिपुलेट, द स्कोप टू मिसलीड, ये भी ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल, जैसे उसमें भी एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि रिसेंटली डीपफेक हैज बिकम अ वेरी बिग कंसर्न। इवन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्पोक अबाउट इट ड्यूरिंग द दिवाली मिलन व्हेन ही वाज एड्रेसिंग द मीडिया एंड सब्सिक्वेंटली इट कॉट पीपल्स इमेजिनेशन। वी जस्ट हेल्ड द सेकंड लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डायलॉग विद जस्टिस सूर्यकांत, the Honorable Supreme Court Judge. He spoke very extensively on our platform on that also. It's a very real problem. And this problem is here to stay. But like many other problems, you can deal with these problems and face them when the opportunity comes. See, there is no perfect equilibrium, even in media. ये optimum point है और ये पहुंच गया और इसके बाद आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मीडिया के अंदर. If that were the case, I'll give you an example of duality. I had a tie-up with BBC, and for about 6 years we used to broadcast the BBC Hindi bulletin on India News in the evening. During Balakot airstrikes, and this is to understand how difference of opinions can come in from a different perspective. During Balakot airstrike, after that, the Pakistani Prime Minister was addressing the National Assembly over there. Now, in our agreement, understanding was that we will not pull down any content, but if it is not in national interest, I reserve the right to take a call on the content. So there was no censorship. But I will define what is my national interest, not BBC. So when this Balakot strikes happened, after that he was addressing the assembly and they cut it live to the Pakistani assembly. Now I don't want to show the Pakistani assembly in my country at a sensitive time like that. It's not right. It's a call I took with my editors and I took it off channel. So BBC went into a whole tizzy and they sent us mail that there's censorship in media, you are being throttled, blah, blah, blah. Now I have studied in England. I have dealt with the British. I know how they think and how they orient. So there's a possibility of them talking down to you also. So when the meeting happened, their editors were there, our editors were there. They said, oh, you have pressure from the government, this, that, whatever. And that's why you took it off. I said, no, this is my stand. It is my outlook on my nationalism. I am entitled to it. And therefore I'll take a call on it. But you have a duality and duplicity in your approach. When you have, when there are, in Kashmir for example, you call terrorists separatists. This is the language they use for terrorists. They call them separatists. But when it comes to the IRA, the Irish Republican Army, or the Welsh Republican Army, then you call them terrorists. You don't call them separatists. What is good for the goose has to be good for the gander also. That is the duplicity. Now my interest is profound to me as a country and as an Indian. They cannot tell me that there is no democracy in media or there is pressure from the government. Who are they to tell me? They have their own policy, they have their own outlook. I have my own. And if I don't have any pressure on me, how can the Western media tell you that we are better than you and you are lower than us? Because we have set the parameters, and according to these parameters, the freedom index is much higher there and much lower there. What is the index? What are the parameters? Who has decided? Who's the arbitrary authority of it? We don't know.
So how do you look at the road ahead? I mean, you've been there for quite some time. You've seen all sides of the coin. I think role of media is definitely going to be very, very important. Mainstream media as well as digital and social and different manifestations that will come in. But what you have to understand is that this is in the true capitalist environment, this is the way democratization of media is going to happen, and it's going to unravel before you. And that is why in the last 10 years you have seen what has happened in the world. You have seen the unthinkable things in politics happening all over the world. You get Mr. Donald Trump elected as the US president. You see the Arab Spring happening in the Middle East. You are seeing majority assert itself. ये मतलब एक तरीके से आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि मेजॉरिटी अपना ओपिनियन वॉइस करने पे भी मतलब शर्क करती थी या सोचती थी कि क्या हम ये बोलें, क्या ये सोशली करेक्ट है, क्या ये सोशली और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है. ये ताकत सोशल मीडिया ने दी है कि लोग अपनी बात रख सकें और बिना डर के रख सकें. So I think it has a very, very important role to communicate, and communication is the essence. And media as a fourth pillar of any democratic setup will play a pivotal role in times to come. Thank you so much. Mr. Sharma, as you all know, is quite experienced in this domain of handling media, as well as his family has been in politics for generations. So we take some hope from what he said, that media certainly will continue to play a very important role as the fourth pillar of democracy. Thank you, Mr. Sharma. Thank you. I say one thing in the end. I remember a quote, and I have it on my wall in my office also. And this was said by Walter Cronkite, who was a very famous US journalist. I used to work for an entity called UPI, United Press International. You know, the problem is we are in the era of breaking news. Everything is break. And there are pressures and pulls and pressures on every news entity to do so also. But he used to say very, very clearly, get it first, but first get it right. I think that's something we should take away with us. How apt. Thank you so much.